Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss UPSC's previous year questions of ethics paper. So today guys, I am going to discuss with you some model questions from UPSC MAINS 2023 examination that was conducted. So we'll discuss its ethics paper. Okay, so in different recordings, we will discuss different questions that were asked by UPSC in this year's ethics paper. So in section A, as you know, there were 6 questions, and under those 6 questions, there were many sub-questions. So we will discuss these 6 questions in separate modules or separate recordings. So in this recording, I will discuss with you question number 1 and its sub-questions and what should be the model answer that you need to write, ideal answer that you're supposed to write, that we will discuss. So guys, in section A, the question 1 that UPSC asked, it was about what do you understand by moral integrity and professional efficiency in the context of corporate governance in India? Illustrate with suitable examples. Okay, so this was the question that was asked. Now guys, in this question, how you should be framing its answer, that I will discuss with you. So first guys, you need to understand that whenever there is any terminology in any question of ethics paper, then you need to define those terms very shortly, very quickly in the beginning, and that definition of terms should be your introduction in the itself. So don't make any separate introduction. Okay, define those terms and that will be your introduction. So here in the question, you need to define 2 terms, moral integrity and professional efficiency. Okay, then after defining these 2 terms, okay, in 20 words, now second part of the question is you have to establish relation between moral integrity and corporate governance. Why moral integrity or how it is important in corporate governance? Next 30, 40, 50 words you can focus on that. Then you have to link separately role of professional efficiency with the corporate governance. That should be your third part of the question. So core terminology definition, first part. Then relation between moral integrity and corporate governance, second part. Professional efficiency and corporate governance, your third part. Okay, and then question also says that illustrate with suitable examples. So you can discuss in the end, okay, as you before you end, that some examples of wherever there is word illustration, then you need to illustrate with some examples that how this moral integrity is linked with corporate governance. एक example दो उसका, how professional efficiency is linked with the corporate governance, उसका भी एक example दो, and complete your question. तो इसलिए each and every word in the question you need to focus and answer. Okay, so first define moral integrity, then professional efficiency, then link moral integrity with corporate governance, professional efficiency with corporate governance, and दोनों के 2 separate examples, and then your conclusion. अब ये सारा बहुत swiftly shortly करना है, 150 words में ही, plus minus 10-12 word चल जाएंगे. So shortly you need to define all these words. So first guys, moral integrity. What is moral integrity? Now, as I am discussing these questions with you, I will be little bit, I will go explain you this concept in broader terms. So, while writing answer, you need to be sharp and precise. But right now, for your understanding, I will go in detail of those concepts and I will try to answer the question very comprehensively. So, guys, first, what is moral integrity? Now, you know integrity in mathematics. Integrity is what we simply called integration in mathematics. And integration in mathematics is what you simply means difference between differentiation and integration. So this is differentiation and this is integration. So same is the meaning of integrity in ethics. So integrity in ethics means wholesomeness, integrative personality, wholesome personality where there are no loopholes in your character. That is your integrity. Okay, so integrity is consistent, confirm character, consistent following of particular principle, norms. वो होता है integrity. Okay, so I always go to office on time. I do everything in my life on time. Okay, so I am integral on aspect of punctuality. So integrity means that consistency, commitment to certain principles or wholesomeness of your character. So, in simply, to put it in Gandhi's words, integrity means your real self and ideal self that you show to the world and what you are internally should be the same. So, Gandhi का जो statement था, man is product of his thoughts, what he thinks, he becomes. So, आपके thoughts, words, deeds, action, everything should be same. That is integrity.
लेकिन फिर यहाँ पे they have added the word moral integrity also. Okay, so integrity can be with respect to punctuality, that you do everything on time. Okay, but when you show integrity with respect to moral characters, with respect to virtues, okay, punctuality is also good virtue, but I never speak lie, I always speak truth. That is your one virtue, speaking or honesty or speaking truth, and now you are being integral about that virtue. So it's a moral integrity. Okay, now you have to be that this word moral is very important, because some people can lie consistently and they say I am very integral while lying. So point is, whenever we discuss integrity, then we talk about those qualities that you need to work on consistently, those qualities that you need to follow consistently, which are necessarily has to be moral, good, ethical qualities. Okay, and that's the meaning of simple term moral integrity. So moral integrity means quality of character to adhere to strong moral principle consistently. You follow those moral principles. Okay, I never do corruption at all, and neither I do corruption on duty, but I don't even use government's car for my personal use. That is moral integrity. Or when I go on any raid as an income tax officer, okay, I don't tell about that raid. I maintain full official secrecy. I follow that principle of secrecy, and I don't tell where I'm going for a raid, even okay, to my family members or even to my life partner. Then that's moral integrity. So moral integrity is you follow any principle consistently with commitment. The next word is efficiency, professional efficiency. Now, what do you mean by professional efficiency? So efficiency, again, simple mathematics term, the efficiency. So efficiency, guys, in mathematics is input-output ratio. In less input, you get more output. That's better efficiency. So when input-output ratio, for example, IC engine's efficiency is 40%. So amount of petrol or gasoline you put, the amount of energy it has, only 40% gets converted into the output. So this ratio of input-output, what is in mathematics, efficiency, is same in the ethics. That you need to be efficient on duty. Okay, so while using time, cost, labor, resources, whatever you are using inputs while performing your duty, you need to minimize the input and ensure maximum delivery of services, maximum output, productivity in output. Then that's efficiency. Now here they just added word professional efficiency. Okay, so in professionally, while on duty, what do you mean by professional efficiency while on duty? So professional efficiency while on duty is that whatever organization I work for, okay, I work there with the productivity. I try to increase the output of that organization and try to reduce the input of that organization. फिर वो time हो, cost हो, labor हो, etc. Now गांधी ने concept अस्तेय में एक statement की बात की थी, एक concept की, कि समय की चोरी भी एक चोरी है. It's a lack of efficiency. कि आप अगर you work for any organization and you go there, take a full salary, but waste the time and don't perform fully, or whatever time the organization is paying you for, okay, you don't work out fully, then ये भी समय की चोरी है. That is अस्तेय. Okay, तो वो भी lack of efficiency को represent करता है. So in professional setting, efficiency means you reduce time, cost, labor, or you increase productivity, you deliver better services to your clients, you bring more clients for your organization, or whatever services that you deliver in extremely good quality, in timely manner. So that's your professional efficiency. Okay, so professional efficiency बहुत short में define करना, that being productive in timely completion of tasks. So you become very productive and timely complete the task and achieving goals and objectives productively. Okay, और आपके जो भी organization के goals हैं, objectives हैं, you achieve them very productively. Okay, you increase the productivity of organization, then you are professionally efficient and delivering high quality result in less time, cost, labor, and you deliver best possible result, high quality result in best possible manner and in less time, cost, labor, resources. Now in moral integrity and professional efficiency, guys, here now these two concepts are also linked in a one way, और वो मैं यूज करूंगा as a conclusion in the end. अभी दोनों का रिलेशन क्या है? If any person who is not efficient in his performance on duty, professionally वो अगर efficient नहीं है, then he is
liability for his organization. So someone who is not efficient can never be ethical. Okay, so you need to be being efficient is one quality of being ethical. So moral integrity and professional efficiency are interlinked and both contribute for the better corporate governance. That one simple line should be your conclusion in the end. तो अभी हमने define किया what is moral integrity, we define what is professional efficiency. Now we'll go ahead now in discussing first part. In the context of corporate governance, what is the role of moral integrity? ये punctually हर चीज मैं काम punctually करता हूँ. I complete all my tasks on time. I deliver all my services on time. या जहाँ पे भी मूवी हो, डेट पे हो, या टू गो टू अ कोचिंग क्लास आई गो ऑन टाइम. तो पर्सनल क्वालिटी हुई. बट हाउ इट इज लिंक टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सक्लूसिवली पूछा है, तो यू नीड टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन दैट एस्पेक्ट. सो माय नेक्स्ट सब हेडिंग शुड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोरल इंटीग्रिटी. सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोरल इंटीग्रिटी किसको बोलेंगे हम? तो इसको भी आपको गाइज मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिखा है, लेकिन आपको एक 40 वर्ड में कॉमा कॉमा डाल के ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं. एंड ट्राई टू यूज दीज हेवी वर्ड्स, वैल्यू लोडेड टर्म्स, सो यू विल हैव टू राइट लेस इन योर आंसर और आप ज्यादा कुछ कम्युनिकेट कर पाओगे. तो यहां मैंने पॉइंटर फॉर्म में दिया है, बट आप कॉमा कॉमा डाल के पूरा एक पैरा बना देना एंड दैट्स योर आंसर. व्हाट यू अंडरस्टैंड मोरल इंटीग्रिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोरल इंटीग्रिटी गाइज means ethical, transparent, responsible business practices. Okay, so you be morally integral on duty in corporate governance means every task you do on duty is ethical, responsible, you complete it in a transparent manner. Then unwavering commitment to ethical behavior by leadership. फिर एक leadership भी has very strong commitment to moral laws, rules. Leadership never compromises with ethical principles, moral principles like रतन टाटा, like अजीम प्रेम जी. तो इस तरह के जो लीडरशिप्स हो, अगर लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग इथिकल मोरल हो, देन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वर्किंग इन अ इथिकल मैनर. ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स. सो लीडर्स ethics, morality has a very strong link with the corporate governance. Then pursuing ethical decision making process. Okay, then आपको you need to pursue ethical decision making. हर डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन में लिया जा रहा है इज थ्रू सेट ऑफ रूल्स, इथिकल रूल्स, मोरल रूल्स, ओके, थ्रू मोरल लॉज. तो वो मोरल इंटीग्रिटी आप इंश्योर कर रहे हो इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देन फेयरनेस एंड जस्टिस इन ऑल डीलिंग्स. देन आप जो जिन भी लोगों के साथ यू इंटरैक्ट, डील विथ all your stakeholders, your employees, your subsidiaries, or your partners, or your shareholders, anyone you deal with, you deal in a fair, transparent manner, in just manner. Okay, you don't compromise on any principle of ethics and morality, and every dealing is fair and just. तो वो भी moral integrity का relation आएगा corporate governance से. Then ethical competence development. Then moral integrity corporate governance में क्या होगा? सो एंटायर जो आपकी वर्क फोर्स है उसका इथिकल कंपिटेंस डेवलप करना. ओके, उनको इथिकल ट्रेनिंग देना, उनके लिए इथिकल लॉज बना के इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, एंड इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर यू हैज वेरी स्ट्रॉन्ग इथिकल कंपिटेंस. ओके, सो सच अ पीपल विथ स्ट्रॉन्ग इथिकल कंपिटेंस, स्ट्रॉन्ग मोरल इंटीग्रिटी, ओके, विल कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देन एडहेरेंस टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ये भी मोरल इंटीग्रिटी का पार्ट है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में को बाइंडिंग लॉज रेगुलेशंस है, फिर वो सेबी के हो, इरिडा के हो, कंपनीज एक्ट हो, वट एवर दैट आर एप्लीकेबल, या इवन खुद ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती है, टाटास कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी, टाटास एम्प्लॉइज कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी, टाटास कोड ऑफ इथिक्स पॉलिसी, ऐसी जो पॉलिसीज है, यू एंश्योर दैट ऑल दिस पॉलिसीज आर गेट इंप्लीमेंटेड इन लेटर एज वेल एज स्पिरिट. सो वो एडहेरेंस टू दिस लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वेरी स्ट्रांगली, तो वो भी आएगा आपके इथिक्स के इसमें. देन एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. यू नीड टू एस्टैब्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इथिकल कंपिटेंस का एक पार्ट है. इथिकल कंपिटेंस मीन्स एम्प्लॉइज विथ स्ट्रॉन्ग इथिकल क्वालिटीज, एंड इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द सिस्टम, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेसेस, हायरिंग, फायरिंग, जो भी डिसीजन होते हैं, एवरीथिंग हैपन्स थ्रू इथिकल प्रोसेस. तो उसको इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी टॉक अबाउट. एंड इंश्योरिंग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन. ओके, और इस तरह के अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्स एंड डिस्क्लोजेस एनी अनइथिकल रॉन्ग डूइंग, अनइथिकल प्रैक्टिसेस, देन उसके लिए यू क्रिएट वेरी गुड प्रोटेक्शन पॉलिसीज. सो वो भी एक पार्ट है मोरल इंटीग्रिटी का. ओके, दैट विल इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस.
So in the context of corporate governance, moral integrity क्या होता है? That moral integrity is ensuring all these qualities. तो आप ये सारा एक लाइन में डाल दो that in context of corporate governance, moral integrity plays role in a different form. For example, or by ensuring ethical, transparent, responsible business practices, fairness and justice in all dealings, developing ethical infrastructure, ensuring whistleblower protection, leadership who is strongly committed to the organizational goals and to ethical principles. तो ये सारा आपने डिस्कस किया. What is the role of moral integrity in corporate governance? Then go to the next part, जो पूछा है कि what is the role of professional efficiency in corporate governance. तो वो भी एक एक्सक्लूसिवली सेपरेटली आपको लिखना पड़ेगा. So what professional efficiency means in corporate governance, in the context of corporate governance. So next subheading डाल देना आंसर में that in the context of corporate governance, professional efficiency means तो टाइमली एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन. आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीजन है वो बहुत टाइमली मैनर से लेते हो. स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, यू इवॉल्व योर ऑर्गेनाइजेशन, यू अपडेट योर ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्विकली, or you take a timely decision so your organization doesn't face any crisis situation or a loss, etc., or your organization adapts and evolves as per the new demands, new challenges. तो वो भी एक timely and strategic decision लेना is a aspect of professional efficiency. You are ensuring efficiency, more output, productivity for organization. Then timely delivery of services, ये भी एक बहुत important part है. Okay, there should be timely delivery of services. आप जो भी services deliver कर रहे हो should be in timely manner, extremely efficient way से. So फिर आधार कार्ड इशू करना हो या पासपोर्ट इशू करना हो, any services that government provides or any private organization provides, for example banking industry, तो saving account, current account, loan disbursal, हर चीज you do it in extremely timely manner. So this timely delivery of services, ये भी एक important aspect है professional efficiency का. Then ensuring competent and skilled delivery of products. Okay, तो ensuring competent and skilled delivery of products. अब ये क्या ये जो पॉइंट है कि आपकी जो सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो शुड बी एक्सट्रीमली बेस्ट वन, द बेस्ट इन एंटायर व्हाइल कंपेयरिंग विथ योर कंपीटिटर्स. तो ये कंपिटेंट सर्विस डिलीवरी, बेस्ट सर्विस डिलीवरी इंश्योर करना एंड रिजल्टेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर आप ये कर पाते हो देयर विल बी मोर कस्टमर्स and more people will like to use your services and you will make profit for your organization. So efficiency is linked with corporate governance. Then optimal use of labor and skills. Then आपके पास जो भी लेबर है या जो लेबर काम करे उनका जो स्किल सेट है उसको आप बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हो. Then using the labor that is at your disposal and their skill set both in a best possible manner, तो वो भी आता है as a part of professional efficiency. Then effective risk management. Okay, आपके कंपनी को जो भी रिस्क आ सकते हैं, लॉस ऑफ क्लाइंट्स और कोई चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, देन यू शुड बी रेडी फॉर दोस रिस्क मैनेजमेंट. सो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट टू इंप्रूव ऑपरेशंस थ्रू फीडबैक्स. ओके, सो स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट और टू इंप्रूव ऑपरेशंस. तो आपके जो भी स्टेक होल्डर्स है, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, योर सब्सिडायरीज, इनको यू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. तो आपका जो भी डिसीजन लिया हो इट रिफ्लेक्ट्स ओके देयर इनपुट्स, देयर ओपिनियन, और बिकॉज दे नो बेटर व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, दे नो बेटर व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस्ड व्हाइल यूजिंग योर सर्विसेज एज अ कस्टमर. तो उनसे फीडबैक लेके अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करना, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रोफेशनल इफिशियंसी. देन अवॉइडिंग फाइन एंड पेनल्टीज, ये भी एक एस्पेक्ट है. ओके, यू इंश्योर दैट फाइन एंड पेनल्टीज your organization receives less fine and penalties, your organization functions in the best possible manner. So ensuring or avoiding fine and penalties, ये भी एक important part है. Then professional audits. Okay, आपके organization में professional audits conduct करना, जैसे CAC करता है गवर्नमेंट के लिए, जो proprietary audit, financial audits, बहुत सारे audits होते हैं. Ensuring those audits in your organization, so if there is any lack of efficiency, okay, if anywhere resources are not getting used in optimal manner or resources are getting wasted, then it can be detected and you can take corrective action to improve the efficiency. So even audits, carrying out proper audit, financial audits, proprietary audits, these professional audits can help improve professional efficiency, which can improve your corporate governance. Then performance appraisals, ये भी करना, that those employees who are very hard working, उनको promote करना, giving them better roles, upgrading their skill sets,
okay, and even removing those who are underperforming employees. तो वो भी पार्ट है आपका गाइस परफॉर्मेंस अप्राइजल्स. सो बाय डूइंग दिस परफॉर्मेंस अप्राइजल यू कैन ट्राई टू इंप्रूव योर ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनिंग. Okay, you can reduce or you can rationalize your human resources. Okay, unwanted resources you can do away with. The necessary resources you can strengthen, improve their skill set, promote them, and through performance appraisals also you can ensure the professional efficiency. Then also ensuring sustainable growth, then causing sustainable growth of your organization, and overall means you keep on growing and growing. तो एक बार मैंने एक रतन टाटा का ही एक स्टेटमेंट पढ़ा था दैट वेयर ही वाज सेइंग कि बेस्ट इंडिकेटर वेदर योर कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड और बैड, ओके, डिपेंड्स ऑन व्हाट शेयर होल्डर्स गेटिंग इन रिटर्न इन द शेयर मार्केट. मतलब नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स बट कॉन्टेक्स्ट वाज द सेम. तो उनका कहना था कि शेयर होल्डर्स यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स फॉर द शेयर होल्डर्स कंसिस्टेंटली इन द शेयर मार्केट, who are holding on to your shares, that means your company is performing in best way and it is causing sustained growth. Okay, so ये sustained growth ensure करना ये भी efficiency को reflect करता है. And then profit making and overall making profit, okay, improving your financial bottom line, economic bottom line of your company, okay, that is also professional efficiency. So guys, now what I wanted to tell you one tip or give you one tip is that whatever points you are writing guys, these points you need to be extremely specific to the point. अब यहाँ पे CSR कहीं पे नहीं आता because CSR is more philanthropic aspect. Question strictly asked you about professional efficiency, okay, then you need to focus on only efficiency parameter. Okay, यहाँ पे फिर integrity pact ये भी चीज यहाँ पे नहीं आती because it is more related to morality, ethics. Okay, तो integrity pact, CSR which is philanthropic thing, okay, या third party ethics, ये जो टर्म्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आर नॉट रिलीवेंट इन दिस क्वेश्चन. सो ऑलवेज राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ओके, डोंट राइट व्हाट यू नो. ओके, सो इसके लिए देन ऑल दिस पॉइंट्स, तो ये भी आपको 50 वर्ड कॉमा कॉमा करके सारे पॉइंटर्स लिख देने. दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल इफिशियंसी मीन्स ensuring timely and strategic decision, comma, timely delivery of services, comma, ensuring competent and skilled delivery of products, comma, optimal use of labor skills, comma, effective risk management. सारे वर्ड एक ही पैरा में. Okay, you are putting 10-15 very value loaded terms here in this answer also. Then in moral integrity point also you added a lot of value loaded terms. Then you define moral integrity, define professional efficiency. Everything is very perfect. And now then you can go to the conclusion. But before that, question also means also contains word illustrate. So what do you mean by illustration? So in illustrate guys, illustrate with examples. So while illustrating with examples, then आप एक एक एग्जाम्पल दो, दोनों इसका मोरल इंटीग्रिटी का एक दो एंड प्रोफेशनल इफिशियंसी का. तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. सो आई हैव एडेड 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम माय नॉलेज. सो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. यू कैन यूज एनी गुड एग्जाम्पल. देयर आर मेनी ऑसम रेप्यूटेड कंपनीज who are working in extremely in moral integral manner and professionally efficient manner. तो उसमें द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो मैंने मोरल इंटीग्रिटी का दे रहा हूं, सेबी इंट्रोड्यूस रेगुलेशंस टू इंश्योर दैट लिस्टेड कंपनी फॉलो फेयर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. ओके, तो ये जो सेबी ओके ऐसे रूल्स बना रहा है टू इंश्योर मोरल इंटीग्रिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो सेबी ने जो रूल्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल कोई आईपीओ आता है तो उस आईपीओ में जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, ओके, प्रोप्राइटर्स है, ओके, दे कांट सेल देयर शेयर्स टिल देयर इज सम होल्डिंग पीरियड. और वो होल्डिंग पीरियड तक, ओके, दे कांट सेल देयर शेयर्स इनटू द शेयर मार्केट, ओपन मार्केट. तो जो लॉक इन पीरियड होता है इन आईपीओ इज वन वे. Okay, SEBI is regulating the corporate sector to ensure that minority shareholder जो हम शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद रहे हैं हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो. तो SEBI ये जो रूल्स बना रहा है, थ्रू दैट इट ट्राइंग टू इंश्योर मोरल इंटीग्रिटी एंड इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो आप एक SEBI का एग्जांपल दो दैट हाउ इट ट्राइज टू रेगुलेट और इंश्योर दिस लिस्टेड कंपनीज फॉलो फेयर प्रैक्टिसेस, ओके, एंड इंश्योर फेयर ट्रांजैक्शंस इन शेयर मार्केट. ओके, वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर रही है एटसेट्रा. तो इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड लॉ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. तो सेबीज लॉ रिगार्डिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इज वन वे दे आर ट्राइंग टू इंश्योर मोरल इंटीग्रिटी इन शेयर मार्केट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो आपने इलुस्ट्रेशन भी दिया.
देन दूसरा इलस्ट्रेशन अबाउट प्रोफेशनल इफिशियंसी, और प्रोफेशनल इफिशियंसी भी मैं क्लास में जो एग्जाम्पल्स देता हूं केएजी के खान स्टडी ग्रुप के क्लासेस में. सो इन केएजी क्लासेस गाइज आई ऑलवेज टेल एग्जाम्पल ऑफ एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक. Their shares are the best one in the market now, growing very fast, rapidly, and also performing very good, because HDFC and ICICI, okay, and there are one or two more banks also, are the only banks, okay, compared to all public sector banks, they have the best quality products, that digital products that they bring for the people. Even they are trying to improve, okay, their entire banking networks और शिफ्टिंग देयर एंटायर बैंकिंग नेटवर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो ये जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ अपनी ऑपरेशंस को अपडेट करना, या लोगों के लिए एक्सट्रीमली कस्टमर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाना, डिजिटल प्रोडक्ट्स लाना, इस वे से खुद को अपडेट करना वेरी रैपिडली इज एन एग्जाम्पल, ओके, ऑफ प्रोफेशनल इफिशियंसी. तो मुझे वो बेस्ट एग्जाम्पल लगा, तो आप वो एग्जाम्पल कोट कर सकते हो. दैट एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक इज ऑफन साइटेड for its efficient delivery of services and professionals with varied expertise, ensuring effective governance and launching customer-friendly new digital banking products. Okay, so for delivering customer-friendly services and ensuring their users will get the best digital and friendly digital banking products is an example of professional efficiency that is linked with the corporate governance. Okay, अब इसके बाद you can simply conclude the part. So in conclusion, in a summary, you can write that moral integrity and professional efficiency are intertwined and work symbiotically. That moral efficiency and integrity both are interlinked. मैंने पहले ही बताया था. Because if you are efficient, then you are ethical. If you are wasting your resources, you are not efficient, then you are not even, you can't expected to be called as an ethical person. So IAS who is efficient is also ethical because he is saving resources of the nation or making profit for the nation, so that money can be used for a welfare of the Antyodaya people, for welfare of those who are below poverty line. तो फिर efficient होना भी ethical होने का एक parameter है, and that's why efficiency and moral integrity are both linked. So moral integrity and professional efficiency are intertwined and work symbiotically. And so morally ethical employee can only be professionally efficient employee who and both work together to ensure trust. Moral integrity will ensure people will trust the organization, and professional efficiency will ensure people will get best from your organization, and both ensure good corporate governance. ये आपको एक लाइन में एंड में 20 एक वर्ड में कंक्लूड करना है. Okay, so this is the ideal way you need to write answer or model answer. That I consider good. तो यहाँ पे आपको मोरल इंटीग्रिटी के लिए मार्क मिलेंगे डेफिनेशन के लिए, प्रोफेशनल इफिशियंसी, देन मोरल इंटीग्रिटी आपने 8-10 पॉइंट पे लिंक किया विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल इफिशियंसी 8-10 पॉइंट पे आपने लिंक किया विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन यू रोट 2 illustrations of moral integrity with corporate governance, professional efficiency with corporate governance and conclusion. तो 7-8 पैरामीटर्स पे यू डेल्ट द क्वेश्चन, और उसमें भी जो लिखा कंटेंट वाज एक्सट्रीमली वेरी हेवी टू द पॉइंट, एंड दैट्स हाउ you will get very good marks in such a questions. Now, so thanks for listening guys. Now in the next video or next recording I will discuss the second question, so do stay tuned for that question also to get a detailed understanding, and do check out my Darshanik IAS channel for more discussion related to essay and ethics paper. You can also join me on UPSC Ethics 4 Telegram channel to download those notes. And you can also download my app Darshanik IAS by Kadam Sir from Google Play and App Store and stay connected there for my essay and ethics classes. So thanks for listening guys.